Welcome back to the channel of Chem Pacific. In this video, I'm going to discuss with you the second half of the topic Spinels. The first half I've already discussed in my part A video. In my earlier video, do check it out. Before we get started, if you're new to our channel, don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon. And also if you like our video, to press the like button. Thank you. And now let's get started. See, this occupational factor, it plays a very significant role in determining the spinels, whether it is a normal or inverse spinel, or if there is any kind of defect in that spinels or not. So usually this occupational number is denoted by the lambda, and it is said if the value of lambda is 0, it is considered to be a normal spinel, and if the value of lambda is half, it is considered to be an inverse spinel. तो नॉर्मल स्पिनल एंड इनवर्स स्पिनल कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, क्या क्या कंडीशंस है, ये मैंने बहुत अच्छे से मेरे पार्ट ए वीडियो में एक्सप्लेन किया है. गो टू द प्लेलिस्ट एंड check the playlist of coordination chemistry. You will be getting the video on normal and inverse spinels part A. Do definitely check it out. So that is why I'm not elaborating it. I have already done in my earlier video. So this is very important that if the lambda value is 0, तो फिर ये नॉर्मल स्पिनल हो जाते हैं. इफ द लैम्डा वैल्यू इज हाफ, ये हो जाते हैं इनवर्स स्पिनल. नाउ दिस occupational number is the fraction of the p atoms in the tetrahedral sites. Okay, now mostly कुछ interesting information हमें मिलता है as because Fe3+ है d5 electronic configurations. ठीक है, हाई स्पिन. सो हाई स्पिन Fe3+, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कोई कि हाई स्पिन Fe3+ विथ d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द CFAC इज गोइंग टू बी 0. सो इसका CFAC आपका डेफिनेटली हो जाते हैं 0. दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. तो फिर इट हैज बीन फाउंड दैट अगर A2+ जो है ये अगर D6, D7, 8, D8 एंड D9 electronic configuration होता है, it mostly results in the inverse structure. Mostly the inverse spinel structure is generally favored. ठीक है, ये एक information है. And also remember that cobalt 3+, this is very important, I already discussed in my earlier videos also, that cobalt 3+ जो है ये mostly in the octahedral field it remains in the low spin state. ये आपको बहुत अच्छे से जानना है. क्यों? Because अगर वो लो स्पिन स्टेट में रहते हैं तो इट विल अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ T2G6, and we know that T2G is considered to be the bonding molecular orbital, and that is why what will happen, the bonding molecular orbital में अगर completely filled होता है completely, तो it will acquire extra stability, because we know that stability or the bond order is the number of electrons in the bonding minus anti-bonding divided by 2. So this, if it occupies if it attains electronic configuration of T2G6, it will attain extra stability due to this electronic configuration. So it mostly tends to remain in the low spin state in octahedral geometry. At the same time, only with the fluoride ligand it is in the high spin state, क्योंकि fluoride ligand is a very weak field sigma donor pi donor ligand, तो वो CO3+ को, since it is a 3D series, CO3+ को लो स्पीड में रहना अफोर्ड नहीं कर पाते. Other than the fluoride ligands, all the other ligands which are relatively strong as compared to the fluoride, they always exist in low spin with cobalt 3+. This is very important information. ये अमोनिया के साथ भी ऑक्टेहेड्रल फील्ड में हमेशा लो स्पिन स्टेट में ही रहते हैं. तो ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्स में बहुत बार इसके बारे में पूछे जाते हैं, तो ये आप बहुत अच्छे से रिमेंबर करना. एंड नेक्स्ट इट इज ऑल्सो सेड दैट लैम्डा जो है इट इज फाउंड to be temperature dependent. So these are the basic information about the occupation factor lambda. तो यहाँ पे देखो, जो कि मैंने आप लोगों को कहा कि Fe3+ जो है, सो Fe3+ के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इंफॉर्मेशन दिया है that since ये D5 हाई स्पिन है, because ये है आपका D5 हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन, सो इसका CFAC क्या है?
is equal to 0. So mostly जो भी A2 प्लस जो होता है वो इसके साथ क्या करेंगे, वो उसके साथ मोस्टली इनवर्स स्पिनल ही करते हैं। तो फिर आप एक चीज नोटिस करो, दैट इज वाई सिंस इनवर्स स्पिनल का लैम्डा वैल्यू क्या होता है 0.5 होता है, तो मोस्टली इसका वैल्यू 0.5 ही है। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग भी देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा Mg2 प्लस एंड Mn2 प्लस में इसका वैल्यू थोड़ा सा अलग है। ये ऐसा क्यों है इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम आपको वही बताना चाहते हैं दैट ऑक्यूपेशन फैक्टर जो है इट plays a very significant role and gives us very important information in determining whether the given complex is normal spinel or inverse spinel or mixed spinels or any kind of defect is there or not. तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को Fe3 plus के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दिया that since Fe3 plus is a D5 high spin complex, so that is why its CFSE is 0. So it normally and mostly tend to remain in the inverse spinel structure with most of the A2 plus complexes. But यहाँ पे only in the case of magnesium 2 plus and manganese 2 plus the story is somewhat different. Definitely I'm going to discuss with you why and how is it so. One more information is there. अगर आप देखते हो बहुत अच्छे से, अब देखो एल्यूमिनियम 3 प्लस जो है इसका मोस्टली सबके साथ जो वैल्यू है ये 0 है, मतलब when the lambda value is 0, it is normal spinel. Now let me recapitulate this once again. So when the lambda value is half or 0.5, it is inverse spinel, and when the lambda value is 0, it is mostly the normal spinel. क्लियर। तो यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन डेटा आप लोगों को दिख रहा है दैट एल्यूमिनियम 3 प्लस जो है ये मोस्टली जितने भी A2 प्लस मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है इसके सबके साथ इसका वैल्यू है 0. इट मीन्स इट्स मोस्टली एग्जिस्ट इन द नॉर्मल स्पिनल. व्हाई इज इट सो? इट इज सो बिकॉज एल्यूमिनियम 3 प्लस हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लैटिस एनर्जी. सो द लैटिस एनर्जी is extremely high for aluminium 3 plus. Therefore, it mostly tends to occupy the octahedral site. As a result of which, it तो अगर A3 प्लस जो है जो 3 प्लस जो कैटायन रहते हैं वो अगर ऑक्टाहेड्रल साइट ऑक्यूपाई करेंगे इट विल डेफिनेटली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ नथिंग बट नॉर्मल स्पिनल. ठीक है, दैट इज वाई आप देखो मोस्टली जितने भी एग्जाम्पल्स है इसका जो वैल्यू है इट इज क्लियरली विजिबल टू इसका वैल्यू 0 है. और जब भी आपका वैल्यू 0 हो जाता है तब वो बन जाता है नॉर्मल. लैम्डा का वैल्यू 0 हो जाता है तो तब भी वो बन जाता है नॉर्मल स्पिनल. क्लियर. एंड विथ देयर इज वन एक्सेप्शनल केस. तो आज मोस्टली हम एक्सेप्शनल जितने भी केसेस है उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे. तो देयर इज वन एक्सेप्शनल केस दैट इज विथ द निकल 2 प्लस. ठीक है, उसका वैल्यू है 0.38. तो निकल 2 प्लस के साथ ऐसा क्या हो गया दैट ये थोड़ा सा अलग हो गया और ये कंप्लीटली 0.5 भी नहीं है. तो इसके साथ थोड़ा एक्सेप्शनल केसेस है वो भी हम डिस्कस करेंगे. व्हाई इज इट सो? तो आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म दैट अगर लैम्डा का वैल्यू 0 होता है तो वो बन जाते हैं नॉर्मल स्पिनल और अगर लैम्डा का वैल्यू हो जाते हैं 0.5 तो वो बन जाता है क्या? इनवर्स स्पिनल. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड दिस गिव्स अ लॉट ऑफ important information to us while determining the spinel whether it is normal or inverse. If it is not normal or inverse, इसका वैल्यू अगर completely 0 या 0.5 नहीं है डेफिनेटली उसमें कुछ abnormality है and what is that वो भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. Now let us move on to solve some of the problems. Now let us start with the problem of this. Point number 1, this CO3O4.
क्लियर। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पिनल। मैं ये डिटेल में बहुत स्लोली आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ताकि आप ये बहुत अच्छे से समझ जाओ। सो जब इसे ऐसा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रीअरेंज दिस। ठीक है, हमें कैटेगराइज करना है कि ये कौन सा स्पिनल है। तो पहले हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं। 3 है तो हम जानते हैं एक 2+ स्टेट में रहेंगे, एक 3+ स्टेट में रहेंगे, और जो 3+ स्टेट में रहते हैं वो 2 in number होते हैं, and then you have the O4. So now it is rearranged. Now first of all what we are going to do is we are going to calculate the CO3 plus which is having the electronic configuration of 3d6. ठीक है, इसका बोथ ऑक्टाहेड्रल साइट एंड टेट्राहेड्रल साइट का CFSE हम कैलकुलेट करेंगे। एज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड, सिंस CO3+ is having the 3d6 configuration, so it mostly tend to occupy the T2G bonding orbital. So it mostly tend to acquire the electronic configuration of T2G6 in octahedral field. That is, it is in the low spin state. क्यों? Because T2G6 is the below the barycenter है ना, so it is extremely stabilized molecular orbital, and अगर T2G6 completely filled हो जाता है तो उसे maximum crystal stabilization energy attained होते हैं. In order to attain maximum stability, it prefers to remain in the low spin state. तो ये most of the ligand, even if it is weak field ligand, for example ammonia जो है इसके साथ भी so CONH3 3+ जो है इस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, उसके साथ भी वो लो स्पिन स्टेट में रहते हैं, बट ओनली इन द विद द फ्लोराइड जो कि सिग्मा डोनर पाई डोनर और काफी वीक लिगैंड है, सो उसके साथ वो हाई स्पिन स्टेट में रहते हैं क्योंकि फ्लोराइड उसे उतना ज्यादा एफोर्ड नहीं कर पाते हैं दैट इसका डेल्टा जीरो वैल्यू हाई हो जाए। अदरवाइज ये बाकी सारे जो लिगैंड है जो इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर लिगैंड है, सिंस अमोनिया इज अगेन अ वीक फील्ड लिगैंड बट अमोनिया इज अ सिग्मा डोनर लिगैंड, सो इट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द फ्लोराइड लिगैंड, तो उसके साथ भी वो हमेशा लो स्पिन स्टेट में ही रहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम करने वाले हैं, तो हम CO3+ का पहले हम करेंगे ऑक्टाहेड्रल साइट जो है, सो ऑक्टाहेड्रल साइट में हम इसका CFSE कैलकुलेट करेंगे। सो ऑक्टाहेड्रल साइट जो है ये क्या हो जाता है, इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल यू हैव T2G, so it is below the barycenter, it is enough stabilized, ठीक है, and this is having minus 0.4 delta zero value, and this is having the EG with energy level plus. So why it is plus? This is above the barycenter, it is higher energy, so it is plus in sign. Since it is having electronic configuration of 3d6, since it is having the electronic configuration of 3d6, therefore ये क्या हो जाएंगे, लो स्पिन स्टेट में रहेंगे, एंड दिस इज T2G6। ठीक है, तो CFSE अगर आप कैलकुलेट करते हो कितना होगा, since it is containing 6 electrons with the energy level of 0.4 delta zero, so its value will turn out to be minus 2.4 delta zero. Clear? Now we are going to calculate the CFSE in the tetrahedral site. ठीक है, now we are going to calculate the CFSE of this in the tetrahedral field. Now tetrahedral field, whatever may be the reason, since the delta T value is always 4/9 of delta 0, so we know that delta T, why is it so, I have already explained in my earlier video, do check it out, ठीक है। So we already know that the delta T is equal to 4/9 of delta 0, so the
CFSE is always very less, so tetrahedral complexes can never afford the pairing of the electrons. Therefore, always remember that whatever may be the nature of the ligand, whatever may be the nature of the metal, whatever may be the condition, tetrahedral complexes are all and always high spin complexes. They're always high spin complexes. So always remember this, the tetrahedral complexes are always high spin complexes. Now calculating the CFSE in the case of the tetrahedral field is a bit different. Now let's see. So in the case of the tetrahedral field, what will happen? You have ऊपर अभी क्या हो जाएंगे, ऊपर आपका हो जाता है, ये completely inverse है, ऊपर आपका हो जाएंगे T2 और नीचे आपका हो जाएंगे E. So this is your E and this is your T2. So in this case, E is lower in energy, it will having the value of negative and minus 0.6. Keep it in your mind, this is delta T. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत गलत करते हैं. और ऊपर जो है इट इज अबव द बैरोसेंटर, सो इट इज कंटेनिंग द प्लस साइन, इट इज प्लस 0.4 डेल्टा टी, नॉट डेल्टा 0, बिकॉज डेल्टा 0 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होगा, नॉट इन द केस ऑफ द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, सो टेट्राहेड्रल साइट जो है अभी इसका हम कर लेते हैं. ये D6 है. ऑब्वियसली मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, अगर वो D6 है तो 1 2 ये हाई स्पिन ही होगा, 3 4 5 6. So now let us calculate the CFSE. So this is equal to, it is containing 3 electrons in the Eg level with energy 0.6 delta T. ठीक है, and it is containing of 3 electrons with the energy level of plus 0.4 delta T. So this will turn out to be minus 0.6 delta T. Now दोनों को आप एक साथ नहीं कर सकते हो कंपेयर, तो कभी भी डेल्टा T में है, since we know that delta T is equal to 4 by 9 of delta 0, so this will turn out to be 4 by 9 of delta 0. So this will become minus 0.27 delta 0. So यहाँ पे हमने CO3 plus का both in the tetrahedral site and the octahedral site compare किया है. Now we are going to calculate the CFSE value of the cobalt 2 plus in both the octahedral field and the tetrahedral field. Now cobalt 2 plus is going to have the electronic configuration of 3d7. So now we are going to do in the octahedral. So let's see, octahedral में होगा तो हमारा क्या होगा, 1 2 3 T2G and EG होगा. So this is your T2G with the energy level of minus 0.4 delta 0, and this is your EG with the energy level of plus, since it's above the barycenter, 0.6 delta 0. So therefore it is going to have D7 octahedral high spin ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7. Now let us calculate the CFSE. The CFSE is going to be, it is having 1 2 3 4 5, so it is going to have 5 electrons in the T2G level with energy minus 0.4 of delta 0 and 2 in the EG level with energy plus 0.6 delta 0. If you calculate, you will find the value of this to be minus 0.8 delta 0. So this is, we are done with the octahedral site. Now let us calculate in the tetrahedral site. So tetrahedral जो है ये आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है. ठीक है,
बहुत जल्दी से मत करो. So tetrahedral sites are always high spin. ये I have already discussed because the CFSE and the tetrahedral site is always very much low. This is 4/9 ना delta 0. So tetrahedral site अगर है तो ऊपर कौन हो जाता है, ऊपर आ जाता है अभी T2 आ जाएंगे. T2 में 3 है, ट्रिपली डिजेनरेट EG नीचे. तो ये EG नहीं होगा, आई एम वेरी सॉरी. G subscript is omitted because it is non-centrosymmetric. So therefore T2 is containing of D7 total this is containing of D7 electrons, which is going to be high spin. 1 2 3 4 5 6 7. Now let us calculate the CFSE. So the CFSE is going to be, it is containing of 4 electrons in the EG level with energy of minus 0.6 delta T होगा. स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गलती कर लेते हैं. एंड 3 into प्लस 0.4 delta T because हम टेट्राहेड्रल का कर रहे हैं. Clear? Okay, so this will turn out to be, this is equal to minus 1.2 delta T. तो हम delta T को delta 0 में convert करेंगे तो 1.2 into 4/9 of delta 0. So अगर इसे solve करते हो you will be getting minus 0.54 delta 0. तो हमने देखा है, हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, कोई भी स्पिनल्स में अगर जिसका ऑक्टाहेड्रल साइट में CFSE जो है इसका वैल्यू ज़्यादा होता है वही ऑक्टाहेड्रल साइट में रिसाइड करते हैं. लेकिन इंटरेस्टिंग सी बात ये है, अगर आप देखते हो बहुत अच्छे से, इन द केस ऑफ कोबाल्ट 3+ इसका भी CFSE इन द ऑक्टाहेड्रल साइट क्या है, इज मच मोर बिकॉज वी डोंट कंसिडर द साइन, वी कंसिडर ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू. ये भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, जब दोनों का CFSE करेंगे हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही कंसिडर करेंगे बिकॉज द साइन ओनली गिव्स अस इंफॉर्मेशन दैट इट इज स्टेबिलाइज्ड. ठीक है, जब वो स्टेबिलाइज्ड हो जाते हैं तो वो माइनस साइन होता है, जब वो डिस्टेबिलाइज्ड हो जाता है तो वो प्लस साइन होता है. तो वो अगर आप देखते हो तो आप देखो कि इसका जो CFSE वैल्यू ऑक्टाहेड्रल साइट है वो है 2.4 और टेट्राहेड्रल साइट में है 0.27 delta 0. So obviously कोबाल्ट 3+ का भी ऑक्टाहेड्रल साइट में आप देखो इसका CFSE ज्यादा है एज कम्पेयर टू द टेट्राहेड्रल साइट. कोबाल्ट 2+ का भी अगर आप देखते हो, कोबाल्ट 2+ का भी ऑक्टाहेड्रल साइट में CFSE इज मच मोर एज कम्पेयर टू द टेट्राहेड्रल साइट. तो अब क्या करेंगे, अब दोनों का ही टेट्राहेड्रल के कंपैरिजन में दोनों का ही ऑक्टाहेड्रल साइट में ज्यादा है. इस टाइप ऑफ कंडीशन अगर अराइज करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको डेल्टा CFSE कैलकुलेट करना है. यू हैव टू कैलकुलेट द डेल्टा CFSE ऑफ कोबाल्ट 3+, मतलब जो इसका वैल्यू है इन द ऑक्टाहेड्रल साइट माइनस जो इसका वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू इन द टेट्राहेड्रल साइट. तो अगर ये आप करते हो आपको मिलता है 2.13 delta 0. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो कोबाल्ट 2+ है इसका भी मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इसका भी डेल्टा CFSE अगर आप कैलकुलेट करते हो of the cobalt 2+, you will find out that cobalt 2+ का जो वैल्यू है वो है 0.8 minus 0.5 of delta 0, which is equal to 0.3 delta 0. So it is clearly visible to you that the CFSE of cobalt 3+ is much more in the octahedral site as compared to that of the tetrahedral site. उसका वैल्यू है 2.13 और उसका क्या था, कोबाल्ट 2+ का था 0.3. सो ये काफी ज्यादा है. अगर ऐसा होता है तो उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब ये हो गया that कोबाल्ट 3+ जो है, कोबाल्ट 3+ is having extremely high CFSE in the octahedral field, so it prefers to occupy the octahedral site. अगर कोबाल्ट 3+, तो कोई भी 3+ अगर octahedral site prefer करेंगे, it will result in the formation of the
नॉर्मल स्पिनल। तो ये कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कोबाल्ट 2 प्लस जो है इट विल रिमेन इन द टेट्राहेड्रल साइड। कोबाल्ट 3 प्लस का काफी ज्यादा CFSE है इन द ऑक्टाहेड्रल फील्ड, सो इट प्रेफर्स टू ऑक्यूपाई द ऑक्टाहेड्रल साइड O4. That is why this is the representation of a normal spinel. So इसका कैलकुलेशन में बहुत सारे इम्पोर्टेंट साइंस है जो बहुत अच्छे से आप लोगों को प्रैक्टिस भी करना है और बहुत अच्छे से समझना भी है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स जहाँ पे गलती करते हैं वो है टेट्राहेड्रल फील्ड का CFSE निकालने में, क्योंकि वो वहाँ पे डेल्टा T नहीं लिखते हैं, डेल्टा 0 लिख देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। और दिस इज अ कंडीशन जहाँ पे दोनों का ही ऑक्टाहेड्रल साइड में CFSE इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू द टेट्राहेड्रल साइड। तो उस कंडीशन में हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। Now let us move on to the next example, and that is this. MgAl2O4। ना यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों ही नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। ऑलरेडी मैंने एल्यूमिनियम का आप लोगों को डिस्कस किया है इन द ऑक्यूपेशन फैक्टर दैट एल्यूमिनियम Al3+ जो है ये मोस्टली नॉर्मल स्पिनल्स ही होते हैं मोस्ट ऑफ द A2+ का कैटायन के साथ, एक्सेप्ट विद द निकल। ये क्यों ऐसा है मैं आप लोगों को डेफिनेटली अभी एक्सप्लेन करूंगी। सो डेफिनेटली ये आपको ऑक्यूपेशन फैक्टर से भी समझ में आ जाता है कि Al3+ मोस्टली रिमेन्स इन द normal spinel configuration only. So that is why is it so? Because aluminium का जो lattice energy है ये very high है। So Al3+ is having extremely high, very high lattice energy because of its high charge and small size. As a result of which it prefers to reside in the octahedral void. That is why mostly अगर Al3+ अगर octahedral void में रहते हैं, Al3+ which is 2 in number and if it resides in the octahedral, तो Mg2+ it will reside in the tetrahedral void and therefore it is always a normal spinel. बट इसका एक एक्सेप्शनल केस है। मैं सारे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केस इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। बहुत अच्छे से इसे आप वॉच करो मेरे वीडियो को टिल द एंड, यू विल बी एक्सट्रीमली बेनिफिटेड विद दिस। सो यहाँ पे ये जो है इसका जो ऑक्यूपेशनल वैल्यू है, ऑक्यूपेशन फैक्टर का जो वैल्यू है, ऑक्यूपेशन फैक्टर का जो वैल्यू है ये है 0.38। सो 0.38 मीन्स इट इज नाइदर द वैल्यू ऑफ 0, दिस इज द वैल्यू ऑफ 0.38, नाइदर इट इज द वैल्यू ऑफ 0, अगर 0 होते तो नॉर्मल होते, नॉर इट इज 0.5 एग्जैक्टली, क्योंकि 0.5 होते तो वो इनवर्स होते। तो ये क्या है? नाउ सी स्टूडेंट्स, Na2+, now you know how to calculate, so I'm not elaborating, I'm just giving the direct value. Na2+ का जो octahedral site है, इसका octahedral site में CFSE जो है वो वैल्यू है आपका -1.2 डेल्टा 0, ठीक है। एंड जो टेट्राहेड्रल साइट में इसका CFSE है उसका वैल्यू है -0.36 delta 0. So it is clearly visible to you that Na2+ is having high CFSE in the octahedral site. As a result of which Na2+ always tend to occupy the octahedral site. But यहाँ पे मैंने already आपको inform कर दिया है that Al3+, since it is having extremely high lattice energy due to its high oxidation state and small size, ठीक है, since Al3+ has got very high lattice energy, so it always prefers to remain in the octahedral site. तो वो क्या होता है कि आप जानते हो जब भी आपका octahedral site से जब भी आपका नॉर्मल स्पिनल से इनवर्स स्पिनल बन जाते हैं, देन द A2+ कैसे होता है?
आप जानते हो, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया इन माय अर्लियर वीडियो, डू चेक इट आउट। A2+ जो होता है नॉर्मल स्पिनल के केस में क्या होता है, ये टेट्राहेड्रल साइट ऑक्यूपाई करते हैं, एंड B3+ जो होता है ये ऑक्टाहेड्रल साइट ऑक्यूपाई करते हैं, है ना, इन द केस ऑफ द नॉर्मल स्पिनल। बट जब भी इसे इनवर्स स्पिनल बनना होता है, देन हाफ ऑफ द B it actually interchanges with A. But aluminum-3 is having extremely high lattice energy, and so it prefers to resides in the octahedral site only. तो ये क्या करते हैं, ये completely tetrahedral site में ट्रांसफर नहीं होते हैं due to the high lattice energy, due to high lattice energy of Al3+, it still occupies some of the octahedral site. तो ये complete pure inverse spinel नहीं है, that is why it is known as defected inverse spinel. This is very important. Clear? So it is known as defected inverse spinel. That is why it is having the occupation factor value of 0.38. ठीक है, तो Ni2+ जो है वो तो आ जाते हैं आपके octahedral site में, because Ni2+ is comparatively having high CFEC in the octahedral site as compared to the tetrahedral site. But Al3+ जो है वो still prefer करते हैं octahedral site में ही रहना, because it is having high lattice energy. So ये completely tetrahedral में नहीं रहते, even though if it's getting some of it's getting transferred to the tetrahedral site, still mostly it prefers to remain in the most of the octahedral sites as well. So it results in the formation of a defected inverse spinel. ठीक है, now let us move on to the next example, that is example number 4. It is example number 4. So the example number 4 is Zn Fe2O4. Now Fe2 obviously जो more in number होता है, so this is in the +3 oxidation state. So Fe3+ is 3d5. So 3d5 अगर है तो आप जानते हो इसका CFEC क्या हो जाएंगे, CFEC will turn out to be 0. Now what about the zinc2+? So zinc2+ is a non-transition element, ठीक है, so this is non-transition element. As a result of which कोई भी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं तो हमेशा याद रखो उसका CFEC we consider to be 0. अगर इस टाइप ऑफ कंडीशन है, बट द साइज, इफ यू कंपेयर द साइज, अगर दोनों का ही CFEC आपका 0 हो जाता है, देन व्हाट वी डू, वी यूजुअली टेंड टू कंपेयर द साइज, वी यूजुअली टेंड टू कंपेयर द साइज. Since the size of Zn2+ size is very much small as compared to the size of Fe3+. ठीक है, therefore Zn2+ tend to occupy the smaller tetrahedral void. Occupies the smaller tetrahedral void, and therefore this spinel turns out to be a normal spinel. Clear? So this is very important, do keep it in your mind, this is very important. ये गेट एग्जाम में भी आ चुके हैं, तो ये बहुत अच्छे से आप स्टडी करो. Now let us move on to the example number 5. So example number 5 is Mn Fe2O4. Again you can see that Mn जो है यहाँ पे manganese जो है, manganese 2+ is having
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5, तो अगर वो 3d5 है तो फिर इसका CFC क्या हो जाएंगे, is equal to 0, and again Fe3 plus is also having electronic configuration of 3d5, so both of them are having CFC 0. But in this case the size of Mn2 plus and Fe3 plus, they have comparable size or similar size, nearly similar size. So you cannot differentiate the size as well. So neither इन लोगों का CFSE में कुछ differentiation कर सकते हो, nor इन लोगों का size में कुछ different, क्योंकि दोनों का ही comparable और similar size है near about. So in this case what happens, दोनों में कोई ऐसा restrictions नहीं है कौन कहाँ पे occupy करेंगे, दोनों कहीं पर भी occupy कर सकते हैं, and that results in the formation of mixed spinels. ठीक है, this is very important. Now let us move on to the next example. Example number 6. So example number 6 जो है वो है Mg Fe2O4. Now यहाँ पे Fe2 जो है, जो ज़्यादा नंबर 2 नंबर में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, which is having electronic configuration of 3d5. अगर 3d5 है हाई स्पिन में, so therefore उसका CFC क्या हो जाएंगे, CFC हो जाएगा आपका 0. Now in this case magnesium जो है which is +2, so magnesium जो है this is a non-transition element. So non-transition होगा तो normally we consider the CFC to be 0. Again the size of magnesium is and Fe3 plus, they have nearly similar in size. So again आप distinguish नहीं कर सकते in terms of CFC, आप distinguish नहीं कर सकते in terms of size as well. उस टाइम में क्या होता है, कोई कहीं पर भी बैठ जाते हैं, कोई कहीं पर भी ऑक्यूपाई करते हैं, and resulting in the formation of mixed spinel. This is also very important. Now let us move on to the last example of this video, and that is NiGa2O4. So gallium is having, obviously gallium is in this case is having oxidation state of +3, which is having electronic configuration of D10. If it is D10, its CFC is going to be 0. But nickel 2 plus in the octahedral site जो है, in the octahedral site it is having the CFC value -1.2 delta 0, and in the tetrahedral site the CFC value is -0.35 delta 0. It means nickel 2 plus, it prefers to remain in the occupy the octahedral site. So अगर Ni2 plus octahedral site prefer करेंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, representation आप कैसे करोगे? So in this case this is represented as Ni2 plus is going to occupy the octahedral site. ठीक है, so this is represented as gallium 3 plus, half of this will occupy the tetrahedral site, and Ni2 plus and half of the Ga3 plus, they will occupy the octahedral site, and this is the representation of an inverse spinel. So this video is very important. Here I have covered most of the examples of spinels. वहाँ पे आप सारे different जो exceptional case है और वो different cases है, जितने भी important information है मैंने यहाँ पे दिया है. I hope you like my video. Thank you for watching our video.